Hello, my dear students. Yes, so today just we are going to discuss the first question in the first chapter of the business studies, that is nature and significance of management. So in the nature and significance of management, there are totally five important topics that in the examination he may ask for 8 mark for in the five questions. So in that five questions, the first important question is characteristics of management. So characteristics means like it is a nature of the management. So in the management we have here some different kinds of the characteristics in the management. The first point is management is goal oriented process. So management is goal oriented process means every organization is established to achieve certain goals. For example, so the goal may be a retail store to increase the sales, or earning the profit, or it's a growth. The goal may be anything like survival, profit, growth, anything. And it is the management that unites the efforts of different individuals to achieve the goals of the organization. So that's why मैनेजमेंट वी कैन से डेट मैनेजमेंट इज़ ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. यानी कि मैनेजमेंट जो होता है ये गोल अचीव करने के लिए बनता है. बिकॉज मैनेजमेंट का गोल कुछ भी हो सकता है, लाइक प्रॉफिट अर्निंग करना, या हो सकता है कि सर्वाइव करने के लिए या ग्रोथ होने के लिए, कोई भी गोल हो सकता है. उस गोल को अचीव करने के लिए हम मैनेजमेंट को क्रिएट करते हैं. डेट्स वाई मैनेजमेंट इज़ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. And come to the second point. Here the second point is management is all pervasive. So all pervasive means management is applicable in all the sectors, like it is applicable in the production sector, even it is applicable in the service sectors, and even it is applicable in all the countries, regions, etc. डेट्स वाई इट इज़ मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव. यानी कि मैनेजमेंट जो है ये हर जगह पर भी हम अप्लाई कर सकते हैं. लाइक मैनेजमेंट जो होता है इट्स ए परवेसिव बोलते हैं. डेट मीन्स इट इज़ अप्लीकेबल इन ऑल द सेक्टर्स. एग्जाम्पल जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैनेजमेंट में जो होता है, और डेट मीन्स इट इज़ इन्वॉल्व इन मैनेजिंग एंड एंटरप्राइजेस और कॉमन टू ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस, वेदर इट इज़ इकोनॉमिक or social or political, etc. What managers do in India, the USA, Germany, Japan also do the same. That's why the management is known as the pervasive. Then come to the third point. Management is and come to the third point, that is management is multidimensional. Management is multidimensional means this management is a complex activity. That means it has a three dimensions. The first is management of work, management of people, and management of operation. So management of work means all the organization exist for performance of some work, like in a factory product is manufactured, and in a hospital patient is treated. Like management trans this work in terms of goals to be achieved, the assigns the means to achieve it. So that's why management is known as management of work. Then come to the second point, management of people. Management of people means it is concerned with getting work done through the people. Therefore, so management takes necessary steps to how to recruit the employees, and how to train up, and how to motivate the staff. So this is known as management of people. And management of operation means the management will ensure that various operations of business such as finance, purchase, production, sales, etc. are conducted efficiently and effectively, so that it requires goods and services as produced in supply to the customers. So management of work, management of people, and management of operation. Then come to the fourth point, that is management is continuous process. Management is consist of the series of functions like planning, organizing, staffing, directing, and controlling. So all the managers perform these functions regularly. So it continues till the organization last. That means मैनेजमेंट जो होता है ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है. तो यहाँ पर जो है प्लानिंग से लेकर कंट्रोलिंग तक ये जो भी एक्टिविटीज़ होते हैं, इट इज़ लाइक कंटिन्यूस. ये जो भी होता है ये कंटिन्यूस होता रहता है. लाइक एग्जांपल हमने प्लान किया, देन उसको ऑर्गेनाइज किया, फिर एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट किया,
फिर उनको मोटिवेट किया, उनको डायरेक्ट किया, देन उनको कंट्रोल किया। अगेन वी आर गोइंग विद द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग। जो भी मैनेजमेंट होता है, इट इज़ कंटिन्यूस, डे बाय डे, मंथ बाय मंथ एंड ईयर बाय ईयर, वेन एवर इज नेसेसरी। Then come to the next point. Management is group activity. Management, it is a group effort. So all the managers and their subordinates work as a group in a team to achieve the objectives of the organization. ये एक आदमी से हम मैनेजमेंट नहीं बना सकते। मैनेजमेंट जो भी बनता है, इट इज़ लाइक ए ग्रुप एक्टिविटी एंड एवरी मैनेजर इन्वॉल्व, इवन द CEO, डायरेक्टर और मैनेजर्स, असिस्टेंट मैनेजर्स, टीम लीडर्स, सब लोगों मिलके यहाँ पर काम करते हैं। That's why management is a group activity. Then next point, management is dynamic function. That means management जो होता है, it adjusts itself to the changing environment. Okay, जैसा कि it change its goals, plans, policies, strategies according to the changing needs of the environment. Then next point, management is an intangible force. Management is an intangible force because हम इसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, but we can feel the presence of the management. Therefore, management is an intangible force that cannot be seen, but its presence can be felt in terms of increasing production, like increased sales revenue, sales, employee satisfaction, wealth creation. ये सारे चीज़ों को देखकर हम मैनेजमेंट को फील कर सकते हैं, लेकिन देख नहीं सकते. So these are the some important characteristics of management, and this is very very important for your upcoming midterm, even for annual examination. So please read out all the points and you can write your explanation on. अगर आप इस क्वेश्चन पे आप सिर्फ पॉइंट्स लिख रहे हैं, आप एक्सप्लेन नहीं कर रहे तो देन यू विल गेट 4 मार्क. अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हैं तो देन डेफिनेटली विल गेट 6 मार्क फॉर दिस क्वेश्चन. सो प्लीज़ इसे अच्छी तरीके से फॉलो कीजिए. एंड मैं अभी न्यू वीडियोस बना रहा हूँ. यू कैन फॉलो माय यूट्यूब चैनल एंड यू कैन सब्सक्राइब इफ़ यू वांट. ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो. हैव ए गुड डे.